Hello students, myself Hanis Bansal. In this video, we will discuss some examples of trigonometry of class 10th. In the previous video, we have discussed trigonometry table and some examples on the basis of trigonometry table. In this video, we will continue our topic and discuss examples of trigonometric equations and functions. First of all, it is given that root 3 tan 2x is equal to sin 30 plus sin 45 multiplied cos 45 plus 2 sin 90. It is given that it is equal. By using this, we have to find the value of x. So let's start the solution, and by putting the value and solve this equation, we will find the value of x. In the left hand side, we cannot solve because we have not any value of x. We have to find the value of x. लेफ्ट साइड का हम सोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें एक्स नहीं पता, फाइंड नहीं है. हम तो सिर्फ राइट का सोल्यूशन करेंगे, तो राइट में सारी वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में है, वहाँ से धीरे धीरे फाइंड करते जाएंगे और पुट कर देंगे और इसका सोल्यूशन ये चलता जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पार्ट साइन 30 इज 1/√1/2 प्लस साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 45 cos 45 1/√2 सॉरी स्टूडेंट्स प्लस 2 मल्टीप्लाई sin 90 is 1. In left side will remain same, root 3 multiply tan 2x 1/2 plus 1 multiply 1 1 root 2 multiply root 2 2 plus 2 1 2. So we will get root 3 tan 2x 1/2 plus 1/2 is 1. By taking the LCM 2 1 plus 1 or plus 2 1 plus 1 2/2 1 plus 2 is equal to 3. So we will get that root 3 tan 2x is equal to 3. This 3 is the value of sin 30 plus sin 45 cos 45 plus 2 sin 90, means the value of this is 3. Now we will find tan 2x. First of all, if we want to find x, so root 3 is multiply, so by transport it will be in divide. ये मल्टीप्लाई में रूट 3 पूरे थे तो उधर डिवाइड में हो जाएगा और ये 3 है. एंड वी नो दैट 3 इट कैन बी रिटन एज दैट रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3. 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इज ऑल्सो 3 डिवाइड बाय रूट 3. रूट 3 कैंसल, सो वी गेट रूट 3. सो वी विल गेट दैट रूट tan 2x इज इक्वल टू रूट 3. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो लेट किया वो क्या किया, tan 2x इज इक्वल टू रूट 3. इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan. लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, tan. सो इन द राइट साइड वी विल गेट द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan. लेफ्ट साइड में हमारे पास tan है तो राइट में भी हम tan ही फॉर्मेशन करेंगे. प्लस हमें बनाना है, राइट में हमें tan का फॉर्मेशन करना है. लेफ्ट में because in the left hand side we have trigonometric function tan, so in the right side we will make the same trigonometric function tan. tan का फंक्शन करना है, वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 3. अब tan में रूट 3 आप टेबल में चेक लीजिए कि tan 0 0 tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 60 रूट 3. तो ये रूट 3 tan किस पर आया, 60. So we will get that tan 2x is equal to tan 60. Both sides the trigonometric function tan are same. Both side left hand side is equal to right hand side. Trigonometric function are same, so angles will also same. So we will get that 2x is equal to 60. So we will get x is equal to 30 degree. Left hand side is equal to right hand side. Both side trigonometric function tan are same, so angle will also same. tan और tan को कैंसिल मत कर देना, कैंसिल नहीं होंगे. tan और tan सेम है तो angle भी सेम होंगे. 2x is equal to 60. Similarly we will solve the example 2, that it is given that in the example 2 we have also find the value of x. It is given that sin 2x is equal to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30. We cannot solve that left hand side because we have not the value of x. We have to find the value of x. लेफ्ट साइड का सोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें x फाइंड करना है, x गिवन थोड़ी है. तो हम सोल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट साइड तो सेम ही रहने वाली है, sin 2x
is equal to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30. Sin 2x is equal to, first of all we will put the values. The first of all, sin 60 is root 3 by 2 multiply cos 30. The value of cos 30 is also root 3 by 2 minus cos 60 1 by 2 multiply sin 30 1 by 2. So we will get that sin 2x is equal to root 3 multiply root 3 3, 2 multiply 2 is 4 minus 1 multiply 1 1, 2 to the 4. So we will get that sin 2x is equal to, इधर का सोल्यूशन तो होता नहीं, तो हमें एक्सपेंड करना है. 4 और 4 LCM इज 4 3 minus 1. ये तो सिंपल आप कर सकते हैं. 3 minus 1 2 by 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4. So finally we will get that sin 2x is equal to 1 by 2. In left hand side we have the trigonometric function sin. लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का? 6 तो होते हैं, साइन क्लॉस टेन क्लॉट सेक क्लोसेक, और हमारे पास कौन सा है साइन. तो राइट में भी हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? साइन ही फॉर्मेशन करेंगे. इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा. सो वी विल मेक द फॉर्मेशन ऑफ साइन इन द राइट हैंड साइड. नाउ चेक द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. साइन 0 इज 0, साइन के लिए किस वैल्यू पर 1/2 मिलेगा? साइन 0 0, साइन 30 1/2. सो विद दैट 1/2 एट साइन 30. साइन 30 क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट में साइन का फॉर्मेशन करेंगे. लेफ्ट साइड में 10 था तो हमने राइट में 10 का फॉर्मेशन किया था, और 10 में कौन सा था? रूट 3 हमें चाहिए था, तो किस पर आ रहा था? 60 पर आ रहा था. Left hand side is equal to right hand side. Both the trigonometric function are same, so it means that both the angles are. Angle 2x is equal to angle 30. So we will get x is equal to 15 degree. In third question, we have to find value of cos 45 minus sin 45 divided by cos 45 plus sin 45. Cos 45 minus sin 45 divided by cos 45 plus sin 45. So let's start our third question. We have not proved, we have not find value of x, we have to find the value of this trigonometric function. So in solution we have to find that cos 45 minus sin 45 divided by cos 45 plus sin 45. First of all, put the value of cos 45. The value of cos 45 is, change the equation that sin 45 plus sin 30 or cos 45 plus cos 60. Cos 45 plus cos 60, cos 45 minus cos 60 divided by sin 45 plus sin 30. Sorry students, change the equation. Cos 45 minus cos 60 divided by sin 30 plus sin 45. First of all, put the value of cos 45 is 1 by root 2 minus the value of cos 60 is 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. Now value of sin 30 is same 1 by 2 plus sin 45 is 1 by 2 root 2. In the numerator we have two fractions. If we want to solve this, we have to take LCM. LCM is 2 multiply root 2. LCM is 2 multiply root 2. Root 2 cancelled by root 2. So we remaining that 2 1 ja 2 minus 2 cancelled by 2 remaining root 2 1 ja root 2. Similarly, we will get the same LCM to root 2. 2 cancelled by 2, so will remain root 2 1 ja root 2. Root 2 cancelled by root 2 remain 2 1 ja 2. So we will get 2 minus root 2 upon 2 root 2. 2 minus root 2 upon 2 root 2. This divide will convert into the multiply. So after fraction will remain reverse 2 root 2
divided by 2 plus root 2. 2 root 2 cancelled by 2 root 2. Same numbers हैं cancel हो गए ना. So we will get the answer that 2 minus root 2 divided by 2 plus root 2. So we will get the answer that 2 minus root 2 divided by 2 plus root 2. Now here we can see that the denominator is irrational. Denominator is irrational. So we will convert the denominator into rational by rationalization. Denominator जो है वो irrational है तो हम इसे rational बनाएंगे. इससे rationalization करते उसके लिए 2 plus root 2 है तो भी बताया था मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करते 2 minus root 2 2 minus root 2. ये हो गया इसका rationalization. अब सोल्यूशन करना है तो देख लिए सोल्यूशन किस प्रकार से बनेगा इनका. सोल्यूशन क्लास से बनेगा इनका ये 2 minus root 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 minus root 2 दोनों सेम हैं तो ये हो गया 2 minus root 2 की होल स्क्वायर. आइडेंटिटी होगी ना. 2 minus root 2 मल्टीप्लाई 2 minus root 2 दोनों नंबर सेम है तो स्क्वायर बन जाएगी. अपॉन जो आइडेंटिटी बोलते हैं a प्लस b और a माइनस b. 2 और 2 सेम रूट 2 सेम प्लस माइनस द डिफरेंस a प्लस b a माइनस b. द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a इज 2 स्क्वायर माइनस b इज रूट 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर. हियर इज ऑल्सो आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. a माइनस b होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. 2 स्क्वायर 4 और माइनस रूट 2 स्क्वायर 2. इसका जो सोल्यूशन है वो अपने थोड़ा इरेज कर लेते हैं. यहाँ बना लेते हैं. क्या बना ये नीचे आएगा इसका सोल्यूशन 2 स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2 टू जा 4 और 4 ले मल्टीप्लाई में रूट 2 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 इज 2. ये 2 स्क्वायर 4 होगी और रूट 2 3 2 4 माइनस 2 2 4 प्लस 2 6 माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाय 2. अब ये 2 इसलिए डिवाइड में है ये 2 डिवाइड में है दोनों ले 6 ले भी और इसलिए भी तो 6 बाय 2 माइनस 4 रूट 2 बाय 2. तो सोल्यूशन क्या आ गया 2 3 जा 6 माइनस ये 2 से कैंसिल होता है 2 रूट 2. इट इज द आंसर. राइट डाउन. Then we will discuss further examples of this chapter. Students, now we will discuss further examples. That fourth example is that tan square 60 plus 4 square sin square 45 plus sin square 90 divided by 3 sec square 30 plus sec square 60 minus log square 30, and we have to find the value of this function. So let's start the solution. Write down the same function. In the solution, write down same function tan square 60 plus 4 square sin 45 plus sin square 90 divided by 3 sec square 30 plus sec square 60 minus log square 30. Now we have to put the value and find the answer. First of all, tan square 60, it is the square of tan 60. Value of tan 60 is root 3 square plus 4 multiply sin 45 is 1 by root 2. Now square of sin 45 plus square of sin 90. Sin 90 is 1 square of sin 90 3 multiply the value of sec 30 cos 30 root 3 by 2 रिवर्स 2 बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस ये वैल्यूज आपको रन करनी पड़ेगी टेबल से पूरी की पूरी. तो सेट स्क्वायर 60 द वैल्यू ऑफ तो सेट 60 इज 2 बाय रूट 3 एंड इट इज द स्क्वायर माइनस cot 30 इज रूट 3 स्क्वायर
Now solve. Square of root 3 is 3 plus 4 multiply. Square of 1 is 1 or square of root 2 is 2 plus square of 1 is 1 divided by 3 multiply. 2 square is 4 or root 3 square is 3. 2 square 4, root 3 square 3 plus square of 2 is 4 or square of root 3 is 3. Square of root 3 is 3. 3 cancelled by 3. Similarly 2 cancelled by 2. We will get 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1 divided by 4 minus 3, 4 minus 3 plus 4 by 3. So we'll get that 3 plus 2, 5 plus 1, 6. 4 minus 3 is 1 plus 4 by 3. 6 divided by 3 1 ja 3 plus 4, 7 by 3. 6. This divide will convert into multiply. Reverse is 3 by 7. So we'll get the answer that 18 by 7. Now in the next example, we have to prove that 1 minus sine 45 plus sine 30. It is in the bracket. Multiply by 1 plus cos 45 plus cos 60. So 4 is equal to 7 by 4. Now solve that left hand side in the solution. Because in the right hand side is a numerical value 7 by 4. So we will solve left hand side and prove that it is equal to 7 by 4. 1 minus sine 45 plus sine 30. 1 plus cos 45 plus cos 60. By putting the value 1 minus sine 45 is 1 by root 2 plus sine 30 is 1 by 2. 1 plus cos 45 is 1 by root 2 plus cos 60 is 1 by 2. 1 plus 1 by 2. It is not a like terms because these are rational and it is a irrational. 1 by root 2 is a irrational. We have proved in our second chapter that 1 by root 2 is irrational. 1 plus 1 by 2, 3 by 2 minus 1 by root 2. This cannot be solved because it is irrational and it is a irrational. 1 plus 1 by 2, 3 by 2 plus 1 by root 2. We can solve this by taking the denominator LCM of denominators, but here we can use a identity that a minus b and a plus b, because both the numbers 3 by 2 same, 1 by root 2 1 by root 2 same. It is positive and it is negative. So a minus b, a plus b is a square minus b square. The a is 3 by 2 square minus b is 1 by root 2 square. Square of 3 is 9, square of 2 is 4, square of 1 is 1, square of root 2 is 2. By taking the LCM is 4. 4 1 ja 4, so 9 minus in 2 table 2 2 ja 4, so 2. 9 minus 2, 7 by 4 is equal to right hand side. It is proved. Write down. Then we will discuss further examples. Students, now discuss further examples. It is given that if x is equal to 30. It is given in this question, if x is equal to 30, x 30 है, then prove that. तब प्रूव करना है. मीन ये तो गिवन है कि x 30 है. प्रूव में दो पार्ट्स, ऐसे बहुत से पार्ट्स बन सकते हैं. We will solve two parts. First, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. We have to prove that both sides are equal for x is equal to 30. And in second, sin x is equal to in root of 1 minus cos 2x by 2. Now let's start solution of first part. First part is that prove sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x for x is equal to 30. प्रूव क्या करना है, sin 3x जो है वो इक्वल है 3 sin x minus 4 sin cube x. For x की वैल्यू पुट करते हैं 30. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin 3x sin 3x, पॉट x is equal to 30.
ऐसे कर लेते हैं, साइन 3 मल्टीप्लाई एक्स कितना पुट करना है 30। ये गिवन है सॉल्यूशन में फॉर एक्स इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू साइन 3 मल्टीप्लाई 30। एक्स की वैल्यू पुट कर दी कितनी 30। साइन 3 मल्टीप्लाई 30 इज 90, साइन 91। Now we will solve that right hand side. Given is that 3 sin x minus 4 sin cube x is equal to में आ जाएगा 3 sin x 30 minus 4 sin cube x 30। 3 multiply sin 30 1 by 2 minus 4 multiply sin 30 1 by 2 here whole cube। 3 1 जा 3 by 2, 4 multiply 1 cube 1 2 cube 8, 4 2 ja 8, so we will get 3 by 2 minus 1 by 2 by taking the LCM is 2, 3 minus 1, 2 by 2 is equal to 1, so left hand side is equal to right hand side 1 and 1. Now we will solve second. In the second we have to solve that sin x is equal to 1 minus cos 2x by 2, x is equal to 30 degree. Left hand side is sin x, sin the value of x is 30 degree and we know that sin 30 is 1 by 2. Now we will solve right hand side. In the right hand side is given that in root of 1 minus cos 2x divided by 2. Now we will solve is equal to root of 1 minus cos 2 1 माइनस क्लॉस 2 और 2 के लिए मल्टीप्लाई में x कितना है 30 डिवाइड बाई 2। 1 माइनस क्लॉस 2 मल्टीप्लाई 30 60 बाई 2। रूट ऑफ इसलिए लिख सकते हैं 1 बाई 2 मल्टीप्लाई। सेम बात तो ये है ना, तो ये 2 1 बाई 2 लिख लेते हैं। 1 माइनस सोल्यूशन तो नहीं हो जाएगा, क्लॉस 60 तो होता है 1 बाई 2, तो रूट में इतना मिला 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 का रूट 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4 का रूट 2, 1 बाई 2 1 बाई 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके लिए x इज इक्वल टू 30। सिमिलरली ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन and our next solution is that sin a plus b is equal to 1. Sin a plus b is equal to 1. It is given that sin a plus b, a और b को ऐड करके sin यूज करने पर 1 और cos a minus b is equal to root 3 by 2. It is given that a plus b 0 to 90 मीन यहाँ जो ये a plus b एंगल आ रहा है ना, ये 0 हो सकता है 90 या उनके बीच में, 90 से बड़ा या 0 नेगेटिव में नहीं हो सकता, बिटवीन 0 to 90 है, 0 15 30 45 6 कुछ हो सकता है बिटवीन 0 to 90। और ये हमेशा करना है a ग्रेटर देन b, फाइंड करना है a और b हमें फाइंड करना है, बट ये गिवन है कि a b से ग्रेटर देन ही आएगा। देखिए सोल्यूशन बड़ा इजी है इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज वेरी इजी ऑफ दिस एग्जाम्पल। First of all, it is given that sin a plus b is 1. So we will solve this. Sin a plus b is equal to 1. We have to find a and b. In the left hand side, we have sin. In the left hand side, the trigonometric function is sin. So in right hand side, we will formation of sin. लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, अभी बहुत से एग्जांपल के लिए लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, साइन है, तो राइट साइड में किसका फंक्शन लेने ले साइन का, ताकि फंक्शन हट जाए रिमूव हो जाए और हमें इतना मिले ए और बी मिले। तो इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन को रिमूव कर देने के लिए ताकि ए और बी मिल जाए हमें।
तो साइन ए प्लस बी कितना है 1। मुझे ए और बी चाहिए अपने को, तो साइन रिमूव करना पड़ेगा, तो ए और बी तो पता नहीं है, फाइंड करना है। लेफ्ट साइड में साइन का फंक्शन, तो राइट में भी साइन का फॉर्मेशन करेंगे, 1 है। अब साइन में ये देखना है कि 1 कौन सी वैल्यू पर मिलता है, तो साइन में 1, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। बोथ साइड्स आर इक्वल एंड trigonometric functions are same, so angle will also same and we will get that a plus b 90। मीन a और b तो फाइंड नहीं हुए, बट इतना तो फाइंड हो गया कि a प्लस बी 90 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आती है कि a और b के ऐसे वैल्यूज मिलेंगे कि ऐड करने पर 90 बनेगा। और इसमें निकला है कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में कुछ भी सकता है, 0 हो सकता है और 90 हो सकता है, 90 तो आ रहा है। नाउ वी विल सॉल्व आवर सेकंड क्लास a minus b is equal to √3. It is the second condition. Given second condition is that class a minus b is equal to √3/2. We want to remove the trigonometric function class. In the left side, the trigonometric function is class, so we will make the right side same trigonometric function class. Left side में class, तो right में class का formation √3/2। अब √3/2 हमें चेक करना है क्लिस पर होता है, साइन पर, क्लॉस पर, क्लिस पर, क्लॉस पर सॉरी 0 पर, 30 पर, क्लॉस 0 0, क्लॉस 30 √3/2। तो √3/2 मिला क्लॉस में क्लिस पर 30 पर। साइड्स दोनों सेम हैं, फंक्शन भी सेम है, तो एंगल्स भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो एंगल सेम होने पर a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ये होगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में क्या है a प्लस बी 90, सेकंड में a माइनस बी 30। अब इन दोनों का सोल्यूशन करके हमें क्या फाइंड करना है a एंड b, और इनका सोल्यूशन हमने 9th में बहुत बार लिया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेथड्स इन 9th क्लास टू सॉल्व दीज इक्वेशंस: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ भी समझ लेना थोड़ा सा, एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। Here we have 2 equations 1 and 2. First is a plus b 90 and second is a minus b 30। सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड क्या है कि आपके पास 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ जो इजी वे है वो ये है a का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 कुछ भी सेम हो या सेम बना लें। और b का कोफिशिएंट भी सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है, +1 -1। कोफिशिएंट सेम हो किसी भी एक वेरिएबल 2 है, a and b, here are 2 variables। if the coefficient of variables are same of any of one, कोई भी 1 ले, a ले, b ले या सेम बना ले, तो वहाँ यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। मीन हम इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, मीन या तो इन दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे ही इन दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस a 2a, और ये b पॉजिटिव ये b नेगेटिव ऐड करने पर कैंसल, और 90 + 30 120, तो a कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 60। इधर वाला इरेज कर लेते हैं। a कितना आ चुका है 60 आ चुका है। ये है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास ये 2 इक्वेशन है, किसी भी 1 इक्वेशन से 1 या 2 से, फ्रॉम 1 and 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल एंड पुट इन द सेकंड इक्वेशन रिमेनिंग इक्वेशन। भी 1 और 2 में से किसी भी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करते 90 माइनस a, या a फाइंड करते 90 माइनस b, यहाँ से फाइंड करें तो यहाँ पुट कर दें, या यहाँ से यहाँ पुट कर दें, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, वो 9th में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो a आया, पुट a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 सेकंड। 1 और 2 में से किसी में पुट कर दें, मैंने 1 में पुट किया, आप 2 में कर सकते हैं। 1 में ये रही a कितना है 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, सो b इज इक्वल टू 90 बाय ट्रांसपोर्टिंग 60, b इज इक्वल टू 30, सो वी गेट दैट a इज 60 एंड b इज 30। a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन ये तो होगी। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए a प्लस b कितना हुआ, a प्लस b 60 + 30 90, सही बन रहा है। a माइनस b 60 - 30 30,
ए माइनस बी 30, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, तो ये अपना एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया. So students, we have discussed some important examples of trigonometric tables in this video, and in the previous video we have discussed the trigonometric table and also some important examples. Now it has been completed your 6th chapter of RBSc board class 10th. Now do yourself the remaining questions, and if you have any doubts then you ask your doubts by WhatsApp or send me your doubts in comment section of our videos YouTube channels. I hope you like the videos and आप लोग जो है अच्छे से पूरा समझ में आ चुका होगा. You may understand the clearly. So students, please like and share the video and subscribe my YouTube channels. Okay students, goodbye.